So let's start with the tips of the true, false, not given session now. True, false, not given. So guys, what we gonna cover today? What's today's agenda? First of all, we'll cover about the explanation of this question type. It means in case if you are not aware that what is the exactly category look like or what kind of how it will look in the exam. So don't worry, we are going to cover that. Second thing, we'll cover the difference between true, false, not given and yes, no, not given. Many candidates are there who are not clear with the difference. So it's very important to cover that. Third thing, we'll cover about the skimming and scanning. Probably you are aware. In case if you are aware, then very fine. In case if you are not aware, then you will come to know regarding that. The strategy, practice, and at last, we'll cover the Q&A session. So guys, first of all, as per our agenda, explanation of this question type. Here in this way, the question will be there in the exam. As you are seeing on the screen, 9 to 13 questions are there, right? And you will be asked to write true, false or not given. एक चीज आपको ध्यान में रखनी है इन द एग्जाम व्हेन यू आर अटेम्प्टिंग द टेस्ट एक बात का ध्यान रखना है कि कभी भी आंसर जो है वो ओनली टी एफ या एनजी में नहीं लिखना जनरली आप उसमें होते हो हैबिचुअल लाइक यू जस्ट राइट टी यू जस्ट राइट एफ और यू जस्ट राइट एनजी गाइस इन द एग्जाम इट विल बी कंप्लीटली रॉन्ग तो ये चीज ये गलती जो है ये कभी मत करना सेकेंड थिंग true, TRUE, in capital letters, not in small letters. So be careful regarding these parts. Not given, पूरा complete not given. Answers capital letters में होने चाहिए, small letters में नहीं होने चाहिए. Next thing, what's the difference between true, false, not given and yes, no, not given? So, what's the main difference? True, false, not given. वो कैटेगरी क्या होती है जिसमें फैक्चुअल इंफॉर्मेशन दी होती है अबाउट अ टॉपिक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन का क्या मतलब होता है लाइक एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन फैक्ट जैसे मैंने बोलना है कि द रेस्टोरेंट सर्व्स क्वालिटी ऑफ फूड और द रेस्टोरेंट सर्व्स इटालियन एंड चाइनीज फूड सो इट्स नॉट द ओपिनियन ऑफ समवन द रेस्टोरेंट सर्व्स दैट इट्स अ सर्विस ऑफ रेस्टोरेंट ये चीज जो है ये फैक्ट है दैट्स वाई ट्रू फॉल्स ये जो अगर क्वेश्चन आपको आता है तो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन विल कम इन द ट्रू फॉल्स नॉट गिवन कैटेगरी सेकेंड कैटेगरी की बात करते हैं yes no not given the text will contain the opinion views or beliefs of the writer for example I say it is said that the restaurant provides tasty food it is said that now it's not the correct information I mean it's not the exact information it's not the fact it's the opinion of someone. It is said that, it is believed that, it is inferred that the restaurant provides quality of food. ये जो है ये opinion है. तो in case of the opinion, yes no not given will be there. Opinion किसी का भी हो सकता है, writer का हो सकता है, किसी भी person का हो सकता है, आपका हो सकता है, मेरा हो सकता है. तो any kind of opinion could be there. But in case अगर opinion की बात करते हैं तो yes no not given होगा और अगर fact की बात करते हैं तो true false not given होगा. ये चीज आपको ध्यान में रखनी है. Next thing. Skimming or scanning? Acha, before reading skimming and scanning, can you let me know that what do you understand by skimming or what do you understand by scanning? आप इस चीज के बारे में थोड़ा आइडिया दे सकते हो स्किमिंग हमने कहाँ पे यूज करनी है स्कैनिंग हमने कहाँ पे यूज करनी है ऑब्वियसली इट्स मेंशन ऑन द स्क्रीन बट कैन यू गिव मी एन आइडिया जस्ट लेट मी नो इन द चैट बॉक्स इन केस इफ यू आर अवेयर ऑफ दैट रीडिंग में टिप्स तभी काम करेंगी अगर ओवरऑल टिप्स क्लियर होंगी ओवरऑल टिप्स का मतलब है स्किमिंग एंड स्कैनिंग अगर वो चीज क्लियर होगी तभी टिप्स करने का फायदा है अदरवाइज देयर इज नो फन हर एक कैटेगरी में स्किमिंग एंड स्कैनिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रूल है आप ट्रू फॉल्स कर लो मल्टीपल चॉइस कर लो हेडिंग्स कर लो मैचिंग कैटेगरी कर लो एनीथिंग skimming and scanning are most important so can you tell me the difference between skimming and scanning थोड़ा आइडिया skimming quickly scanning details very good Sania skimming is used in fill in blanks it could be used for the fill in the blanks it could be used in any category skimming और scanning basically सभी categories में आती है चाहे हम लोग headings की बात करें चाहे हम लोग fill ups की बात करें even if we talk about the multiple choice skimming और scanning हर एक category में आएंगे so guys skimming और scanning का मतलब क्या होता है skimming का क्या मतलब है just to have an overview
एक आइडिया लेना, एक पैसेज की हाईलाइट लेना, और वी कैन से बोलते हैं ना ऊपर ऊपर से पढ़ना, जस्ट लाइक दैट। स्कैनिंग का क्या मतलब होता है? टू रीड इन डिटेल, मतलब अंदर जाके पढ़ना। अच्छा, अब एक चीज है, कितनी हमें स्किमिंग यूज करनी है और कितनी हमने स्कैनिंग यूज करनी है रीडिंग में? इज इट लाइक 50-50, 80-20, 60-40? क्या लगता है कि ज्यादा यूसेज किस चीज की होती है? स्किमिंग की होती है, स्कैनिंग की होती है? करण, यू हैड रेज योर हैंड, जो भी क्वेश्चन है प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। Just let me know in the chat box whatever question you have. Otherwise, we'll discuss the Q&A at last. लेकिन अगर आपको स्टार्ट इसमें क्वेश्चन आ रहा है या इसमें प्रॉब्लम आ रही है तो जस्ट लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। अच्छा, ज्यादा किसकी यूसेज होती है, स्किमिंग की या स्कैनिंग की रीडिंग में? Those who are solving the text, what do you think? What we use more, skimming or scanning? Let's check it. स्कैनिंग। हाँ, तभी कई बार रीडिंग में टाइम नहीं मैनेज हो पाता, ये भी चीज की प्रॉब्लम है। समटाइम्स वी सफर फ्रॉम टाइम मैनेजमेंट, और समटाइम्स इट डज हैपन आंसर इज इन फ्रंट ऑफ अस बट स्टिल वी गेट डिस्ट्रैक्टेड एंड वी राइट द इनकरेक्ट आंसर। समटाइम्स इट डज हैपन। चलो एनीवेज, स्किमिंग और स्कैनिंग दोनों की इक्वल यूसेज है। 50% स्किमिंग यूज होगी, 50% स्कैनिंग यूज होगी। अब आप पूछोगे ये कैसे? बिकॉज जनरली इन रीडिंग वी हैव 40 क्वेश्चंस, ठीक है? तो 40 क्वेश्चंस की जब हमने लोकेशंस फाइंड आउट करनी है तो स्किमिंग यूज करनी है, और जब हमने आंसर का फाइंड आउट करना है तो स्कैनिंग यूज करनी है। मतलब जितनी इंपॉर्टेंस स्किमिंग की है उतनी ही इंपॉर्टेंस स्कैनिंग की है। 40 क्वेश्चंस के लिए, हर एक क्वेश्चन के लिए हमें स्किमिंग भी चाहिए और स्कैनिंग भी चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो जब हमने ओवरव्यू रीड करना है तो फिर हमारी स्किमिंग हमने यूज करनी है, और जब हमने डिटेल में रीड करना है तो फिर हमने स्कैनिंग यूज करनी है। थोड़ा सा और इसको अंडरस्टैंड करते हैं। वी कैन यूज इट टू फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ द आंसर। मतलब फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट लाइन में है, सेकंड लाइन में है, फिफ्थ लाइन में है, कहां पे कौन से लाइन में है, उसके लिए हमने क्या यूज करनी है? स्किमिंग। we can use it to find out the answer from the selected portion of the passage. Let's say if I think कि मेरा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो है वो थर्ड और फोर्थ लाइन में है, तो थर्ड स्किमिंग करके मैंने उस पोर्शन को थोड़ा सा ब्रैकेट में डाल लिया। Let's say like this. If I think that my answer is going to be in this word, in this extract basically, or my answer is going to be in this context, then what I will say, then I will just read it in detail to find out my exact answer. आंसर पोर्शन आएगा, आंसर पैसेज आएगा, आंसर का सेलेक्टेड आएगा, क्या आंसर आएगा? सपोज दिस वन इज देयर, इस चीज को हमने पूरा डिटेल में जाके पढ़ना है, और बाकी जो इन्फॉर्मेशन है इसके ऊपर की या इसके नीचे की जो फालतू की डिटेल है उसको हमने सिर्फ स्किम करना है, स्कैन नहीं करना। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हैं, प्रिंटिंग ऑफिस, ठीक है? तो प्रिंटिंग ऑफिस की बात उन्होंने की हुई है, प्रिंटिंग ऑफिस की बात वो कर रहे हैं। फर्स्ट पैसेज में हमने प्रिंटिंग ऑफिस अंडरलाइन किया, कीवर्ड प्रिंटिंग ऑफिस को फाइंड आउट किया। लेट्स से एक मुझे मिल गया फर्स्ट पैसेज में और एक मुझे मिल गया फिफ्थ पैसेज में, दोनों लोकेशन से मैंने अंडरलाइन कर लिया, प्रिंटिंग ऑफिस एंड प्रिंटिंग ऑफिस। अब जो प्रिंटिंग ऑफिस वाली एग्जैक्ट लाइन है उस लाइन का एक एक वर्ड बनना है, स्कैन करना उसको। स्कैन जब हम लोग कोई डॉक्यूमेंट को करते हैं तो उसकी हर एक डिटेल नोट होती है, तो स्कैनिंग का मतलब होता है कंप्लीटली रीड एवरीथिंग। और जब मैंने लोकेशन फाइंड आउट की, स्किमिंग मतलब ओवरव्यू। ओवरव्यू का मतलब ये नहीं है कि उसको पढ़ना नहीं है, बस ऐसे ऐसे करके छोड़ दिया, मस्ट नॉट बी लाइक दैट, जस्ट टू हैव एन ओवरव्यू। ओवरव्यू का मतलब है कि क्वेश्चन की जब तक लोकेशन नहीं मिलेगी तब तक आंसर नहीं मिलना, देयर इज नो पॉसिबिलिटी। सो मेक श्योर लोकेशन में भी उतना ही एफर्ट लगना है जितना आंसर में लगना है, लेकिन जब एक बार लोकेशन पता लग गई तो पूरे पैसेज की जो फालतू की इंफॉर्मेशन है वो रीड करने की कोई नीड नहीं है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस थिंग। नाउ लेट्स मूव फर्दर। स्ट्रेटजी क्या है? मेन थिंग स्ट्रेटजी क्या है कि सबसे पहले हमने क्या करना है, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन में अपनी स्टेटमेंट जो है उसको टू पार्ट्स में डिवाइड करना है। कैसे करते हैं स्टडी? अब एग्जांपल क्या है हमारी, द ऑफिस इज क्लोज्ड एट वीकेंड्स। सपोज ये एग्जांपल है हमारी, ठीक है? ये हमारा क्वेश्चन आ गया, जो ऑफिस है वो वीकेंड्स में क्लोज होता है। उसको पहले अंडरस्टैंड जरूर करना है। ये नहीं है कि क्वेश्चन को जल्दी पढ़ के दो पार्ट्स में डिवाइड किया, क्योंकि जब तक आपको क्वेश्चन अंडरस्टैंड नहीं होगा, जब तक आपको क्वेश्चन नहीं क्लियर होगा, until then you, even if you are
मूविंग टू द पैसेज यू आर रीडिंग द सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन, बट स्टिल उसका फायदा कुछ नहीं है। सो मेक श्योर पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के उसको समझो। इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में करो, हिंदी में करना है हिंदी में करो, पंजाबी में करना पंजाबी में करो, फ्रेंच में करना फ्रेंच में करो, जो लैंग्वेज आपकी फेवरेट है। अब फर्स्ट पार्ट आ गया हमारा ऑफिस इज क्लोज्ड, ठीक है। अब सेकंड पार्ट आ जाएगा एट वीकेंड्स। ये हो गया फर्स्ट पार्ट, ये हो गया सेकंड पार्ट। इस तरीके से हमने डिवाइड कर लिया। अब सेकंड स्टेप क्या करना है हमने, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, ये हमारा सेकंड पार्ट है और ये हमारा आंसर है। अच्छा एक चीज तो हमें पता है कि अगर हमारा फर्स्ट पार्ट ट्रू है, ठीक है, पैसेज में से बड़ा फर्स्ट पार्ट ट्रू है, सेकंड पार्ट ट्रू है, आंसर क्या होगा ट्रू। अंडरस्टूड। फर्स्ट पार्ट फॉल्स है, सेकंड पार्ट फॉल्स है, आंसर क्या होगा फॉल्स। क्लियर। फर्स्ट पार्ट नॉट गिवन, सेकंड पार्ट नॉट गिवन, आंसर नॉट गिवन। ये तो बहुत इजी है, ठीक है। अब प्रॉब्लम कहां पे आती है, अगर एक पार्ट ट्रू है दूसरा पार्ट फॉल्स है तो फिर हमारा आंसर क्या होगा फॉल्स। अगर एक पार्ट ट्रू है एक पार्ट नॉट गिवन है, आंसर वुड बी नॉट गिवन। एक पार्ट फॉल्स है एक पार्ट नॉट गिवन है, आंसर वुड बी नॉट गिवन। टेक आउट इट्स स्क्रीनशॉट, ठीक है, अदरवाइज यू कैन अंडरस्टैंड दैट जस्ट फॉर अ व्हाइल, देन वी विल डू इट्स प्रैक्टिस। थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड करो। Okay guys, let's move further. Now very important part, practice। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चंस हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। Astronomers often find something odd on the sky. The CMB is the thermal radiation across the entire universe. The CMB varies from extremely low to very high temperatures. Investigation of fluctuations of temperature in the space helps scientists to understand what the cosmos is made of. The cosmic supervoid is the largest structure in the universe. I have just read it from my side. आप लोगों को एक बार अपने अकॉर्डिंग पढ़ना है। I will solve one question for you, right? So that you can be completely clear it. Okay. So this one, let me hide the video so that you can completely read the passage. So, astronomers often find something odd on the sky. इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया। फर्स्ट, astronomers often find something odd. This is my first passage. Oh, sorry, first part on the sky. This is second part. ठीक है? तो if we go to the passage, right? First of all, we will do the skimming here. Keyword मिल गया? Astronomers found something odd, right? This one. More than 10 years ago, while taking the temperature of the universe, astronomers found something odd. ठीक है, ये लाइन आ गई हमारी। दोबारा पढ़ते हैं। More than 10 years ago, while taking the temperature of the universe, astronomers found something odd. Right. So what could be the answer? True, false or not given? What do you think? क्या आंसर हो सकता है इसका? ट्रू हो सकता है, फॉल्स हो सकता है, या नॉट गिवन हो सकता है? नो वरीज, अगर कोई कंफ्यूजन है इट कुड बी फॉल्स। ओके, अच्छा एक चीज का ध्यान रखो, यहाँ पे ऑफन दिया हुआ है, तो ऑफन का उल्टा क्या होगा? क्योंकि बाकी स्टेटमेंट जो एस्ट्रोनॉमर्स है, फाइंड समथिंग दिया हुआ है, ठीक है, और ऑन द स्काई भी दिया हुआ है हमें, ठीक है। अब ये वर्ड जो है ना, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है हमारे लिए। तो इफ वी डू वन थिंग, इसमें अगर हम लोग रीड करते हैं, मोर देन 10 years ago while taking the temperature of the universe, उसने बोला 10 साल पहले, 10 साल पहले उन्होंने किया था, ठीक है। अब किया कि नहीं किया, या अक्सर फाइंड आउट करते हैं कि नहीं करते? ट्रू आएगा, फॉल्स आएगा, नॉट गिवन आएगा? कम ऑन, ट्रू, फॉल्स, नॉट गिवन, राइट? एक्चुअली इस आंसर इज नॉट गिवन, क्योंकि ये वाला पार्ट जो है ना ऑन द स्काई, वो हमें ट्रू दिया हुआ है।
लेकिन ऑफन फाइंड आउट करते हैं, कब करते हैं, मतलब कभी कभी करते हैं, वो चीज क्लियर नहीं है। अपने तरफ से कुछ भी एस्टिमेशन नहीं लगानी, वन पार्ट ट्रू वन पार्ट नॉट गिवन, द आंसर वुड बी नॉट गिवन। Now, in case if someone is having a doubt, just post your question in the chat box so that I can have an idea. Or in case if someone is clear, then also let me know. If you are clear with that, then we can do the practice. Yes, Karan, you had raised your hand. Just post your question in the chat box. And Sagar, you had also raised your hand. So just post your question in the chat box. Guys, just post your question in the chat box so that we can clear it. No, Puriya, NG लिखते हैं तो not given पूरा लिखना है, NOTGIVEN. If you write only NG, it will be incorrect. This could be false in case अगर often की जगह, often का क्या मतलब होता है 80%, लेकिन अगर वो कहते हैं it rarely happens या it sometimes happens, something like that, अगर sometimes आता है या rarely आता है या कभी नहीं आता है, फिर false आएगा। स्टेटमेंट की कॉन्ट्रडिक्शन नहीं दी हुई, स्टेटमेंट को सपोर्ट किया हुआ है लेकिन पूरी तरह से सपोर्ट नहीं किया हुआ, दैट्स व्हाई द आंसर वुड बी नॉट गिवन। दैट इज द मेन थिंग। आई होप इट्स क्लियर नाउ। बाकी और क्वेश्चंस करते हैं, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा, बिकॉज more and more you will attempt, then the things will be clear. Okay, guys. Now we have 4 questions, and you guys have completely 5 minutes. ठीक है? These two passages are there. एक क्वेश्चन हमने फाइंड आउट कर लिया। अब दूसरे क्वेश्चन का आंसर, मतलब सेकंड और थर्ड क्वेश्चन का आंसर इसमें हो सकता है, इसमें नहीं भी हो सकता। इन केस इफ यू आर रेड विद दिस, एक पैसेज आप रीड आउट करो, जितने क्वेश्चन मिलते हैं इट्स फाइन। अगर इन केस इफ यू आर नॉट गेटिंग द क्वेश्चन, आई विल चेंज द स्लाइड, यू कैन लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, जस्ट टाइप डन। क्वेश्चन हो जाता है, जस्ट टाइप डन, आई विल चेंज द स्लाइड एंड देन यू हैव टू solve the rest of the question. Okay, I will give you completely 5 minutes and your time starts now. जितने क्वेश्चन इस स्लाइड में से मिलते हैं, जस्ट सॉल्व इट एंड देन टाइप डन इन द चैट बॉक्स। Okay, if we go to the second question, the CMB is a thermal radiation across the entire universe. Tell me what would be its answer, true, false, or not given. Just solve this question with you. Clearly, be clearly. Okay, right. If you guys are done, just raise your hand. If you guys are done with the question, just raise your hand. We will check the answers at last. Right? We'll check the answers at last. Okay. If you guys are done, just raise your hand. Okay, guys. Perfectly fine. Perfectly fine. I'll give 1 minute for every question. Karthik, see, answers are not only in this passage. We have some different passages as well. Okay. So we have again the same question, this passage. Now, one question you have, CMB varies from extremely low to very high temperatures. Tell me the answer is there or not. If yes, just let me know the answers.
Yeah, hi, Ridhima. Answers yes. No, yes could not be there. It would be true. Yes नहीं होगा, true हो सकता है. Because instructions are true, false, not given. So we have to write down true, false, not given only. We don't have to write yes, no, not given. Make sure. Yeah, right. True could be there. Let's see. Let's see. So if you are done with this question, just let me know. I'll change the slide so that we can go to the next questions. Third question is done. If third question is done, uh, fourth question is done. Third and fourth questions are in this paragraph. Third and fourth. Are you done or not? Third and fourth question. Come on. Make sure you have to write down your answers simultaneously on your notebook. It's very important because at last we are going to check every answer. Keep on writing on your notebook as well. I'll give you completely 2 minutes to solve these two questions. Time starts now. I believe you guys are done with this. You have still time in case if you want to change, you can. Okay, let's change the paragraph. So this is the last paragraph. Okay, for this passage. This is the last paragraph for this passage, and I'll give you complete a minute because we have only last question left, which you have to solve. Cosmic super void. Cosmic super void. Once you are done, just raise your hand. Once you are done, just raise your hand. Okay. Guys, very careful. Be very careful. Two-part strategy, remember this thing. If you are using a two-part strategy, then it's not going to be wrong in any way. Yes, Siddhima, I'm not getting your question. Okay, you have to ask question. Right, right. You can post your question in the chat box if it's okay with you. Please post your question in the chat box. If it is related to this, it's fine. In case if you want to ask some other question related to some other thing, then we can do it at last. Okay. Okay, Ridhima, I'll tell you about that as well. I'll tell about that.
Yeah, this is for the reading, and I'll tell about the daily class as well. No issues. Okay, guys. So your 1 minute is over. I believe you guys are done. So now check your answers and let me know your scores. How much you scored. First answer we had already done. First answer we have already done. It is not given. Second, true. Third, false. Fourth, true. Fifth, not given. Okay, now let me know your scores. Out of 5, how much you scored? Out of 5, how much you scored? 4, okay, that's fine. 3, perfectly okay. 3, right. Monroe was 5, very good. Puriya 3, that's fine. So guys, let's do one more passage. थोड़ी सी और practice करते हैं. Okay, last one. Sure. I just explain it. Wait a minute. तो fifth वाला एक बार discuss कर लेते हैं. Guys, fifth question है cosmic supervoid is the largest structure in the universe. ठीक है, जो cosmic का supervoid है, that is the largest structure in the universe. So what we have done, we just divided into two parts. The first part here, the cosmic supervoid is the largest structure. Second point here in the universe, right? So if we go to the yes here cosmic supervoid, ठीक है, हमने skimming की. So cosmic supervoid so big that it might be largest structure in the universe. Okay, so we have in the universe एक part दिया हुआ है, this is true, right? So second thing they are saying cosmic supervoid, we have this. Third thing they are saying largest structure, yes, we have this. But one thing they are saying it is the, and here they are saying it might be the. Is means surety. I get up early in the morning, right? Tomorrow I may get up early in the morning. Difference is there. I get up का मतलब है मैं उठती हूँ. This thing is sure. She is doing this work. वो ये काम कर रही है. She might do this work. वो ये काम कर सकती है. Possibility and actual दोनों में difference है. That's why the answer is not given. Why not false? Why not false? Because even that thing is not sure. True और false के केस में complete surety चाहिए. In case of the not given, complete surety is not required. That thing, here comes the difference. Right? It's not about a journal reading. See, Ridhima, it's just about the tips. It's from the academic journal, just from the tips. Okay. Second one. Okay, right. Second we discuss कर लेते हैं एक बार. So the second question we have, let me go back. Yes, here. So we have the CMB is the thermal radiation across the entire universe. Two-part strategy, right? The CMB is the thermal radiation across the entire universe, right? So we have the question, astronomers were measuring the thermal radiation. We have got the keyword thermal radiation. We have got the entire universe. It means our answer is here only. A glowing relic of the Big Bang. But are they talking about CMB? Is it? To gaze at this cosmic microwave background or CMB? Yes. The name is same, CMB. ठीक है, तो उसने बोला हुआ है CMB is a thermal radiation. ठीक है, astronomers were measuring the thermal radiation. और वो thermal radiation है क्या? To gaze at this cosmic microwave background और CMB ही है. ठीक है, तो हमारा एक पार्ट जो है वो तो आ गया ट्रू. Across the entire universe, is it across the entire universe that bathes the entire universe? Yes, it's there. So second part is also true. So the answer, conclusion, true comes true. अब इसमें the answer was not only in this line because I had to read the second line as well because it is related to that. To gaze at this. This का मतलब क्या है? Pronoun. Pronoun के लिए हमें एक बार noun में जाना पड़ेगा और noun किसमें दिया हुआ है? First line. So that thing is important. It's very important to read. कुछ भी information skip की आंसर गलत हो जाएगा. So make sure regarding that.
Now let's go to the next passage. ठीक है, अब एक बार next passage कर लेते हैं. So guys, here are the question. If you want to read the question first, you can. Africa had the warmest July day ever on July 1st. It's very important to read the question because once you don't read the question, you may be distracted and ultimately the answer could be incorrect. So सबसे ज़्यादा जो focus करना है वो question पे करना है. Scanning की दो जगह requirement होती है, एक question के लिए और एक answer की exact line के लिए. So Africa had the warmest July day ever on July. The temperature is rising due to the increased level of carbon dioxide in the atmosphere. 2015 might be, अब ध्यान से, it might be the hottest year in the history. Record warming was recorded in various seas such as Black and Azov Sea. The year 2015 might very well consist of a number of very warm months, right? So we have the passage in front of us. Okay, we have two passages, right? And we have two questions over here, first and second question. So just solve the first and second question. And once you are done, just type done in the chat box or you can raise your hand. Come on, do fast. And I'll give you completely 2 minutes for this. Riddhima, whatever your question is there, please let me know in the chat box. Solve these two questions, guys, fast. Okay, that's fine. Raghu, we check your answer again. I'm saying that no need to be do in a hurry. We have time. If we take it on an average 1 minute for every question, even then it's fine. Take your time, guys. Just use a strategy that you have just learned. So only first and second question you guys have to solve. Third, fourth, fifth पे अभी नहीं जाना. Only first and second question. Listen to the instructions carefully. सिर्फ फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन का करो और क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है. You can recheck your answers if you have got time. Don't do in a hurry. Okay, the time is up. Time is up. Right? So let's move on to the next passage now. We have the third question answer over here. Third question here, it could be the fourth question as well. Could be. You will have to check it yourself. Third और fourth, दोनों का आंसर जो है वो लिख सकते हो. Fourth question का आंसर next passage में भी हो सकता है. So third one you have to find out surely. I'll give you again 2 minutes for this. Come on, time starts now. Be careful. Don't do in a hurry. Don't rush. एक एक चीज को पढ़ के करो.
You guys have time. In case if you want to recheck it, you can. Don't do in a hurry. Don't rush. You still have 1 minute left. Yeah, you guys have still 1 minute left. Just use your time properly. Okay, the time is up. Time is up. Now let's move on to the next passage. Now this one is the passage. In case if you wrote, if you are getting the answer of fourth, you can write it. But in case if you don't get it, then you know what to write. Fourth or fifth question का अभी ये solve करना है. Come on, do it fast. Fourth and fifth question. Okay guys, इसमें एक चीज है जो बात हो रही है तो 2015 की बात ही हो रही है because we have read it in the earlier passages. So don't write the answer not given over here. In case if you are writing it because of 2015, अगर 2015 के कारण not given लिख रहे हो तो वो गलत हो जाएगा. But in case if you are writing it for some other reason, then it could be. Okay, तो 2015 की ही बात हो रही है पहले passages में. Don't forget that. So if you have solved it, just raise your hand. I'll give you 30 seconds more. Right. Time is up. Time is up. Now check your answers. Check your answers and let me know your scores. Let me know your scores out of 10. Out of 10. Check your answers and let me know your scores out of 10. Very good, Karthik. 6, 8. That's fine. Anyone who got 10 on 10? Why first falls? Okay, we just study that. No worries. Monroe's 9. Very good. 4 out of 5. Simran, might be you joined later. Or in case if you solve the first passage, just let me know your scores out of 10. So the doubt is in the first one, I suppose. Yeah, first one. Okay, right. Perfectly fine, no issues. The participants who raised their hands, just guys post your queries in the chat box. Please post your queries in the chat box. Karan and Riddhima, post your queries in the chat box. Wherever you have doubt, third one also. Okay, fine. Second and third, that's fine. Oh yes, first and third, not second one, first and third, right? Let's study that. So we have the first one here. So what they are saying, UK had its warmest July day. First of all, read the question. Africa had the warmest July day ever on July 1st. So Africa had the warmest July day, first part, ever on July 1st. This is the second part. Okay, so if we go to the passage, the UK had its warmest July day ever on July 1st. So July 1st को जो warmest day होता है, that is of UK, right? This is not of the Africa. And Africa had the second warmest day on record.
तो अफ्रीका का जो डे है वो यूके के बाद आता है, यूके का सबसे ऊपर है, अफ्रीका का सेकंड नंबर पे है। तो ये वाली न्यू इन्फॉर्मेशन है, जुलाई 1 की तो बात की हुई है, तो ये तो ट्रू आ गया। फर्स्ट वाला जो है दिस इज फॉल्स, सो द कंक्लूजन वुड बी फॉल्स। आई होप इट्स क्लियर नाउ। एंड इफ वी गो टू द थर्ड क्वेश्चन, the third question, many experts believe that, तो experts का मानना है 2015 will be the warmest year on record by some margin. So guys, they are saying that experts believe that कि 2015 जो है वो ऐसा होगा. So this is just a belief, or I can say this is just a possibility. Again, might be the hottest year. This is the first part in the history. This is the second part. So the first part is true, second part is true. The answer will be true. Right? I believe now it is clear. They are saying it believe that it will be. For example, I believe that it will rain tomorrow. This is my opinion. So it means that it may rain tomorrow. It's not that fact. It's not the false statement. It's just the opinion. Opinion में हमेशा may, might, could, would, should जो है वही use होता है. I hope it's clear. क्वेश्चन माइट बी एंड द पैसेज विल बी नहीं है, विल बी से पहले बिलीव भी है, उस चीज को भी देखो. द आंसर अगर वो नहीं होता, सिंपली लिखा होता 2015 will be the warmest year on record by someone, then it would have been false. But right now they are saying that they believe that it will be. So it is making the opinion. That's why it would be the possibility. Right? So one thing we have to be very sure regarding that कि कौन कौन सी चीज जो है वो कब बोली हुई है, वो चीज के regarding completely you have to be sure. Okay guys, one thing I want to say to you, in case if you want to watch it again, दोबारा सॉल्व करने हैं क्वेश्चन, रिकॉर्डिंग जो है वो दोबारा देखनी है एक बार, तो you can get the link in the chat box. You will get the link in the chat box that is of the YouTube channel. Otherwise I will share it with you. ठीक है, इस रिकॉर्डिंग को अगर आपने दोबारा देखना तो आप दोबारा भी देख सकते हो, सो दैट योर डाउट्स विल बी कंप्लीटली क्लियर. जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो चीज जो है वो दोबारा क्लियर हो जाएगी फिर आपको. Okay, let me just share the link with you. Or if you want to watch these kind of recordings, or if you are interested to attend the sessions, then you can join this link. I have shared it in the chat box. ठीक है, वहां से आपको जो भी अपडेट्स होंगे वो मिलते रहेंगे. और अगर यही रिकॉर्डिंग दोबारा देखनी है, then you can go to this link. In case if you have subscribed the YouTube channel, it's fine because it's going to be displayed over there only. Yes, if you want to watch this recording again, you can go to the YouTube link. And in case if you want to attend various seminars or the various webinars, then you can join the Telegram group. Have shared both links. And if you want to join the online classes, or if you want to have, if you would like to have any inquiry, then I am posting the contact numbers in the chat box also. You can go there and then you can ask regarding that as well.
Now, if you have any question, then just let me know. Let's have a Q&A round now. We have daily live classes. Writing feedbacks are also there. So now, any question that you would like to ask? Anything that you would like to ask related to reading, related to this session, or related to IELTS? Any question? You can post it in the Q&A box. Otherwise, you can ask in the chat box. Anyone is having any doubt or anyone would like to clear? Yes. Okay. The use of articles in listening. Right. Articles use entirely depends upon grammar or like grammatical word, or I would say if the sentence is correct grammatically or not. For example, some of the nouns are there with which we have to use that. For example, car. In case if it's written, answer it's car, and word limit is 2 words, then it's compulsory to write the car. We can't write only car. So it's entirely depends upon the grammatical way that whether the sentence is grammatically correct or not. According to that only, it will be there. And guys, if you have any doubt in the reading question 1 to 5 or 6 to 10 that we have covered today, you can go to the YouTube link. You can go through the recording again. You can choose, you can read, you can listen to everything. You can choose your answers again. And if again there will be a doubt, then you can post your queries on the YouTube channel so that you will be completely clear with the thing. Any other question to anyone? Any other doubt? Yes, same is for the reading as well. It entirely depends upon the grammar, nothing else. If in case if you are making the grammatical like articles error, might be you're not aware of the articles usage completely. That's why the mistake is being there. Okay, guys. Anyone is having any doubt, any other question that you would like to ask? I would highly recommend you to watch the recording again in case if you didn't get 10 on 10, because then you will be completely aware of that. And then again, when you are doing the true false, or again, when you will solve the true false, then the things will be more clear. Yes, Raghuveer, you can post your question in the chat box. Post your question in the chat box. Skimming and scanning. Okay, we had discussed it deeply. I can just tell you right now overview. Skimming means to have an overview idea. Just like right now, we are discussing. We are just discussing about the overview. We are not right now discussing it in detail. Scanning is to go in the detail to read every word, to understand everything. And skimming is just to read an overview and have an idea. For example, when we read a news, at the time we skim it, we don't scan it. And when we do IELTS reading, at the time we scan. So skimming we have to do when we have to find out the location of the question. 2015, 15 is a keyword, just find out 2015. This is the skimming. And when we get the location, that answer is in the first line, second line, third line, then it's there. Yes, Monroe's flights have been stopped. IELTS testing. IELTS testing is not there. Right now, I would say that for the May exams have been cancelled, but probably it could be there for the month of June. And there's a high possibility that exams will be there for the month of June. In case if you are already aware of the completely exam, everything criteria, then it's perfectly fine. You can just directly go and fill your exam. Then whenever you will get the date, you will be informed regarding that. But in case if you want to prepare, then you can contact. Everything is up to you. And guys, if you want to get the further updates regarding the further session,
Don't forget to join the Telegram group. I have shared the link in the chat box. And if you have any other query, then contact numbers are also there. You can contact and you can clear your queries. And yes, on YouTube, do watch today's recording shortly, completely, because it will be updated. It will be there only for 48 hours, not more than that. So during that, you just have to do that. And it will be posted on the YouTube within an hour. You will get the recording just in coming up. Okay, I believe things are completely clear now. I think, yeah, you're welcome. I hope you enjoyed the session. It was informative for you. If any query will be there, you can either watch it on the YouTube or you can contact directly. Everything is up to you, right? So now I'm going to end the session. Okay, guys. Have a good day. Stay home. Stay safe. Goodbye.